So yesterday we used Sublime Text Editor. Today I'm planning on to use VS Code. I hope you guys already know about VS Code because you guys have already been familiar with Python, right? So Python idle में तो नहीं किया होगा पूरा टाइम. थोड़ा बहुत VS Code किसी ने तो use किया होगा यहाँ पे. So VS Code is like an upgrade to Sublime Text Editor or an upgrade to text editors. Okay, let me open up Notepad so that we can have two keywords in our mind. The first one is text editor. In fact, Gupta, right? You have system programming as a subject in which, in section D specifically, we have text editor as a topic. Or second thing is IDE. अगर इसकी कोई full form जानता हो, then it is integrated. अब मैं पूरा लिखने लगा. Integrated Development Environment. So this is what VS Code is about. Like this is VS Code. IDE. ये एक text editor नहीं है, बल्कि ये एक IDE है because it is providing us with some functionalities जो इसको you can say IDE qualify कर देता है. Such as you can see, I have all my folders docked. जो भी folders में मेरे codes पड़े होते हैं, I have docked them over here. I've mapped them over here, and I can easily access any of the code which I'm working on. Like right now, I'm working on some client work, some website of my client. So उसकी सारी files मेरे को यहाँ पे ऐसे visible है. If I have to access images, I can easily access images like this. You can see that, right? So this is one of the feature you'll see in most of the IDEs. Then second thing, you'll see some extensions in VS Code. So I have some extensions installed already. You can see those. जैसे ये पूरा theme आपको दिख रहा है, this is purplish kind of thing, right? So this is like the power of an IDE where you get to customize your workspace. Okay, more about that later on, I believe. Let's start with the stuff, the main part. That is JavaScript. So कल हमने HTML CSS किया था, but today let's try to learn a little bit of JavaScript. And मैं एक बहुत ही specific functionality पे work करने वाला हूँ JavaScript की. That is sending an email on form submission. So I'll just type that down so that we can remember that. Sending an email or sending responses of the form over an email on form submission, of course. So this is the problem statement we are going to work on today. ठीक है कि मान लेते हैं कोई आपने फॉर्म बनाया, उसको जैसे ही कोई सबमिट करे तो जो भी उसमें रिस्पांस भरा होगा, we want that to be delivered on our email so that we can get notified every time we just submit a form or anyone submits a form over our website. So the service I'm going to use is email.js. So I recently discovered this one. Previously I was using this service known as FormSpree. So you can also check that out. But इसमें एक basic functionality थी जो मेरे को नहीं चाहिए थी. So I just switched to email.js. Any of them is fine. Okay, so let me just mention it over here so that you guys can get these notes over WhatsApp group. बात के लिए काम आएगा. Email.js and FormSpree. जो कोई ऐसा है यहाँ पे जो मेरे साथ साथ कर रहा है ये सारी चीजें. So मैं थोड़ा स्लो कर सकता हूँ. But अगर सारे लोग सो रहे हो तो मैं जल्दी जल्दी करके निपटाऊंगा. If anyone is with me, then he can just raise hand or text over the messages. No one? Yes, I want you to be slow down. Okay. Yukta is also doing with us. So, okay, sure. Just open up email.js.com और इस पे अपना account बना लीजिए. Just sign in. अब मेरा account already बना हुआ है, but you can click on create free account. And after signing it up, sign up करने के बाद जैसे email add कीजिए, अपना नाम add कीजिए, password डालिए, captcha भरिए. After signing up, you will get a verification mail over the mail, and after verification, you just have to sign in. Normal procedure. और sign in करने के बाद you can just, you'll be redirected to the dashboard. So this is how dashboard of email.js looks like. So after signing in, what we need to do is we need to add a new service. So let me explain you a basic fundamental of this particular service. That is, इसमें आपको अपनी email verify करवानी पड़ती है. Like after creating an account, you have to add a new service over here. And यहाँ पे आपको you can say अगर आप Gmail use करते हैं, then you can verify your Gmail.
If you are using some specific SMTP server जो आपने GoDaddy या फिर Namecheap से खरीदा हुआ है, you can try that out. अगर आप Yahoo user हैं या फिर Outlook user है, you can add any of it. I believe most of the services which I have used is Gmail, Outlook, Yahoo, SMTP as well. I've used Amazon SES, simple email service, something like that. तो Amazon SES एक बहुत ही पर्टिकुलर यूज केस रखता है अपने साथ जब आपको न्यूज़लेटर क्रिएट करनी होती है. न्यूज़लेटर इज लाइक आपने कहीं पे अपनी ईमेल ऐड की है एंड अब आपको मार्केटिंग एंड प्रमोशनल मैसेजेस ओवर द ईमेल आते रहेंगे. सो ये वेबसाइट्स के केस में बहुत ही पॉपुलर है बिकॉज वेबसाइट्स के पास जब आप लॉग इन करते हैं तब आपको प्रमोशनल ईमेल्स आनी शुरू हो जाती है, राइट? सो दैट्स वेयर Amazon SES इज समथिंग यूजफुल. फिलहाल के लिए यू कैन जस्ट लॉग इन विद Gmail. इसमें आप कोई भी सर्विस का नाम डाल सकते हैं. आई कीप इट Gmail ओनली. और सर्विस आईडी इज समथिंग जिससे यू कैन से ईमेल जेएस रिकॉग्नाइज करता है कि आप कौन सी सर्विस यूज कर रहे हो. कि जैसे मैंने मान लो इसमें आई क्रिएट अ सर्विस, आई कनेक्ट माई अकाउंट. लेट्स से आई कनेक्ट दिस अकाउंट एंड देन मेक श्योर सेंड ईमेल ऑन द बिहाफ वाला चेक बॉक्स को चेक किया हुआ है एंड देन जस्ट कंटिन्यू. सो लेट अस से ऐसे आपने 5 सर्विसेज क्रिएट की है. सो ये सर्विस आईडी ईमेल जेएस को हेल्प करेगी रिकॉग्नाइज करने में दैट विच सर्विस आर यू टॉकिंग अबाउट और यू आर यूजिंग. ठीक है, तो जैसे अगर मेरे को cyberD02 वाला अकाउंट यूज करना है, सो आई यूज दिस सर्विस आईडी. ओके, अब ये इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है, ये सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज है. ये आपको साइड बाय साइड करते करते यू विल जस्ट अंडरस्टैंड दैट. एंड देन यू कैन यूज सेंड टेस्ट ईमेल टू वेरीफाई कॉन्फ़िगरेशन एंड क्लिक ऑन क्रिएट सर्विस. अब यहाँ पे यू कैन सी 500 ईमेल्स पर डे. तो Gmail SMTP पे 500 ईमेल्स पर डे का कोटा होता है. लाइक यू कैन नॉट रिसीव और सेंड 500 ईमेल्स पर डे, मोर देन दैट. ओके, एंड ईमेल जेएस जो है इट वुड अलाउ यू टू सेंड और रिसीव 200 ईमेल्स डायनामिकली पर मंथ. सो ये एक फ्री प्लान है ईमेल जेएस का जिसमें वो 200 ईमेल्स आपको प्रोवाइड कर देता है. यहाँ पे मेरी डिफॉल्ट सर्विस है जिसमें मैंने अपना यही वाला अकाउंट यू कैन से लॉग इन किया हुआ है. और ये वो वाली सर्विस है जो अभी हमने क्रिएट की थी. ओके, नो वेट, ये अभी वाली सर्विस है जिसमें हमने ये अकाउंट लॉग इन किया था cyberD वाला, एंड उसने बाय डिफॉल्ट उसको चेंज कर दिया क्योंकि ये न्यू सर्विस ऐड की है. सो शैल आई स्लो डाउन और यू गाइज आर विद मी? एंड आई होप इट्स नॉट गेटिंग बोरिंग. अगर बोरिंग होगा तो मैं इसको क्विकली एक्सकेलेट करके एंगुलर की तरफ मूव ऑन करूंगा बिकॉज वन ऑफ द टारगेट ऑफ टुडेज मीट इज टीचिंग यू गाइज अबाउट एंगुलर. Okay, I'll proceed then. So, after logging in, मैं steps भी लिखते जाता हूँ, if that helps. So, first, sign up, then log in, then add service, and make sure to check send on my behalf while adding the service. Okay, then the fourth thing जो अब हम करने वाले हैं, तो fourth thing is creating an email template. So यहाँ पे ऑलरेडी मैंने 2 ईमेल टेम्पलेट्स क्रिएट किए हुए हैं एंड आई बिलीव कि ये अभी मेरे यूज में आ रहे हैं. I'll show you how I'm using these. So let us say मेरे पास एक वेबसाइट है. This is a website that I was working on and I'm still working on. Okay, you see I have a book a call button over here, right? So as soon as I click that, I see a beautiful form opened up right over here. अब इसमें अगर मैं अपनी डिटेल्स एंटर करता हूँ and let's click on submit. It's asking me please select a time slot. Okay, let's select a time slot then. I would say 1 to 2. So ये book a call form है. Like you just have to fill in your details like full name, email ID and other details, and then select a time slot, and then we'll receive a email over our email address जो हमने अभी यहाँ पे email services में verify करवाया था. Okay, and as soon as I click on submit, it's asking me to wait. Let's wait. Yeah, thank you, we will contact you soon. This is the message that would be displayed after you successfully fill this form. And let's see the email template which is connected with this form. So this is my default template and I believe this is new inquiry.
So हमें दूसरा वाला देखना पड़ेगा in which we find, okay, that was the same one. ये new inquiry वाला ये form. Okay, over here you see the details we will be getting is name, email ID, mobile number, service, date and time, and message. It's same as this. So date and time would be this, full name, email ID, business name. Okay, this is the stuff. And I believe ये wrong account है. ये दूसरा account है जो मैंने खोल लिया. मेरे पास एक और account था. Just give me a sec. Sorry for the confusion. I believe this one. Right, because ये website के साथ मैंने account बनाया था. Okay. इसमें मेरी यही वाली ईमेल आईडी कनेक्टेड है. आई होप यू वुड यू हैव अंडरस्टूड द प्रोसेस, राइट? हम आप सब कॉलेज स्टूडेंट्स हो तो मेरे को बच्चों की तरह स्पून फीड नहीं करना पड़ेगा एक स्टेप. सो इफ यू हैव अंडरस्टूड द प्रोसेस कि मैंने यहाँ पे एक सर्विस ऐड की थी एंड सर्विस में मैंने ये वाला ईमेल अकाउंट अपना अटैच किया था एंड फिर उसके अगेंस्ट मैंने एक ईमेल टेम्पलेट क्रिएट किया था. दिस इज द ईमेल टेम्पलेट एंड ये भी गलत आईडी है. शिट, आई एम सॉरी. सो डेवलपर्स के साथ ये इशू रहता है. आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट. Okay, finally. So this is book a call form और उसके against this is the email template in which you can see name, business, mail, number and time slot. वही सारी input fields जो हमने यहाँ पे input की थी अभी, right? And जिस पे हमने submit किया था. So इस format में हमें एक mail receive होने वाली है. And let's see the mail itself. So to check the mail, मेरे को अपना email खोलना पड़ेगा, of course. And let's see if we received that mail कि अगर किसी ने fill किया था. In fact, you guys can try that out, you know. आप ये form fill कर सकते हो arkinfotechsolutions.com पे जाके and I would receive your book a call inquiry. So I'll see in the send section and check this out. So these are the details which I filled and आपको verify करवाने के लिए I would enter some other name. Like I would enter, let's pick someone from here. Let's pick Gupta, right? So her name, Gupta. Email ID, let's say iukta@gmail.com. Business name can be ukINC, right? Contact number can be anything मैं अपना डाल देता हूँ और it would be 425. Let's submit. So please wait and done, right? So let's see now. So check this out. This is the details we filled up and we are receiving the mail, right? और मेरे को फोन पे भी मेल का नोटिफिकेशन आ गया. So this is how it works. So any confusions till now? या फिर पूरा ही हवा में चला गया? If anyone can just tell me about this thing. कि किसी को समझ में आया कुछ जो अभी तक किया हमने? Yes, sir. Are you sure? Because I can again explain, but you will have to tell me कि मुझे कौन सा part explain करना है. Okay, I believe Sarveen is with us because वो काफी times active है. So Sarveen, did you understand this thing जो मैंने अभी किया? मैंने सिर्फ अभी process explain किया, मैंने आपको develop नहीं करके दिया ये वाला. So I want to know if you have understood how this email thing is working. Yes, I'm doing right now within my system, and yeah, I'm trying to do it just like you, but as I'm beginner, so No issues. I have some doubts. Yeah, you have doubts, you can just text over there this in this message box so that कम से कम एक चीज तो सीख के जाएं आज हम, right? So Yeah, sure. I hope at the end of this session I can give some notes of the session. I'm just creating these. I hope these are fine by you. Okay. Yes, I'm taking the snapshot of it. Thank you very much. Yeah, I'll just share this on WhatsApp as well, and you can take a screenshot if you want. Okay. That will be helpful. Okay. Okay. So till now, what we have done is हमने एक emailchase.com नाम की वेबसाइट को एक्सप्लोर किया जिसमें we just created an account and then logged in. Then the next thing what we did was I added an email service which was my own account. एंड उसको ऐड करते समय वी नीड टू मेक श्योर दैट एक सेटिंग आती है सेंड ऑन माई बिहाफ, उसको आपको चेक करना है बिकॉज इफ यू डोंट चेक दैट तो ये सर्विस नहीं वर्क करेगी. आफ्टर चेकिंग दैट यू वुड जस्ट हैव टू
just submit that service, and it would be submitted like you can see over here. Okay, wherein you'll have a quota of 200 emails per month. अब मैंने already कुछ मतलब कुछ लोगों ने already मेरे को mail send कर दिए, so that's why it's reduced to 165, but that won't be the case in your case. Then you have to create an email template. अब email template कैसे create करना है, ये मैं जब अभी फॉर्म न्यू बनाऊंगा आपके सामने, देन आई वुड जस्ट एक्सप्लेन यू, बट यू नीड टू मेक श्योर बस कि इसमें वही डिटेल्स आएंगी जो आपके फॉर्म में है. लाइक आई हैड माय नेम इनसाइड अ फॉर्म, and I have name over here as well. I had email, business name, contact number, email, business name, and contact number, and then I had a time slot. So ये सारी डिटेल्स हम टेम्पलेट में भी होनी चाहिए. एंड देन चेक दिस आउट. सो ये मेल जानी किसको चाहिए? नाउ व्हाट आई वांट इज, जब कोई यूजर इस वेबसाइट पे आए एंड ही क्लिक्स ऑन दिस बटन एंड ही फिल्स दिस फॉर्म, सो बिकॉज मेरी ईमेल आईडी वेरीफाइड है, सो ईमेल जेएस के पास ऑलरेडी एक परमिशन है कि वो ईमेल्स जो है मेरी ईमेल आईडी से मेरे को ही सेंड कर सकता है. सो दिस इज लाइक टेक्सटिंग योरसेल्फ ऑन व्हाट्सएप. हमारे पास व्हाट्सएप पे भी आजकल वो एक फीचर आ चुका हुआ है कि अगर आप खुद को मैसेज डालना चाहे यू कैन डू दैट, राइट? सो दिस इज लाइक कि मुझे ही खुद को मेल आएगी. एंड देन यू कैन ऑल्सो यूज वेरिएबल्स इनसाइड इट कि किस नाम से ये मेल आनी चाहिए. सो द नेम शुड बी द नेम वेरिएबल. जो भी मैं यहाँ पे नेम इनपुट करूंगा उस नाम से मुझे ये मेल आनी चाहिए. इट्स लाइक दैट. अब ये फ्रॉम मेल भी है मेरे पास एक ऑप्शन, इसको आप ऐसे ही रहने दे सकते हैं. दिस इज ऑफ नो यूज टू अस, ये वैसे ही वर्क करेगी. ओके, एंड देन यू कैन जस्ट सेव दिस टेम्पलेट, एंड एक बार ये सेव हो जाएगा, then what you can do is you can test it, and to test it you can simply use this form. And because मैंने इसको already इस form के साथ attach कर रखा है, so I was able to test this out over here. मैं एक और test करके दिखाता हूँ. Like I'll just submit this from Ishnoor's site, and I would say ishnoor@gmail.com. Okay, Gmail के spelling गलत है. Business name can be anything, and then time slot can be 6 to 7. Let's submit this. And as soon as I submit this, I would simply see a response over here. If I refresh this, and you can see that. So we are getting simultaneous response कि Ishnoor ने ये form submit किया, although मैंने ही किया था, but because I'm receiving the details. Okay. Excuse me. Yeah. जो आप कर रहे हैं वो मैं भी साथ साथ कर रही हूँ, तो क्या मैं कुछ पूछ सकती हूँ? Sure, please. हाँ, एक्चुअली मैंने जो ऐड न्यू की ऑप्शन आई थी ना, वहाँ पे मैंने क्लिक किया ऐड न्यू सर्विस, तो मैंने वहाँ पे जीमेल क्लिक कर दिया. ओके, Sure. तो उसके बाद वो नेम पूछ रहे हैं, तो वहाँ पे जीमेल लिखा आ रहा है और नीचे सर्विस आईडी. सो व्हाट आई हैव टू डू विद द सर्विस आईडी कॉलम? In service ID you just have to leave it as it is, because उसमें already कुछ ना कुछ input आया होगा, right? या तो उसको ऐसे या ही छोड़ जस्ट दीजिए. And just connect your Gmail account. ओके. Cool. Try doing that. यस. And I believe Tanveer just asked जब सिमरन वो मेरे को तब से कॉल कर रहा है, so उसको बोलिए कि मैं सेशन ले रहा हूँ एक, if you can please. Okay, yeah, sure. Thank you. Okay. So what we have to do now? अब क्या है कि मैंने अभी तक आपको दिखाया कि ये कैसे वर्क कर रहा है. Now let's build one. ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं भी स्क्रैच से बिल्ड करने की कोशिश करता हूँ अब, and I'll show you how quick this is. अभी it's 26, right? By 46 this whole thing will be completed. That's my guarantee. Okay. So what I'll do is I'll open this email JS in incognito, so that मेरा account already कुछ signed in नहीं है, मैं भी एक new account create करने वाला हूँ. I'll enter my name, that is Manus, and then I can use an email ID. In this case, I can use 02@gmail.com. I hope this is available with me. And in any case, I can use any other as well. Okay. So I'll have to add the password. So I would keep it like capital ABC @123. I would add और मैं क्योंकि स्टार्टिंग से कर रहा हूँ, तो इनकेस किसी ने अभी तक नहीं किया था शुरू, तो कर सकते हो आप, राइट? सो नाउ आई नीड टू ओपन अप द सेम मेल जो मैंने वहां पे डाली थी फॉर द वेरिफिकेशन.
and this was the mail, right? So I would have received a verification mail over here. This is it. Now I just have to confirm it, and as soon as I confirm it, it would open up the dashboard for me. You can see that, right? So अब मैं sign in कर सकता हूँ उससे with the same account that I created right now. So 02@gmail.com, capital A B C @123. चाहो तो मेरा ये अकाउंट यूज कर लो, ये ईमेल आईडी और पासवर्ड है, इसी से कर सकते हो, मेरे को कोई इशू नहीं है. साइन इन कितने एंड here we go. Now, as I explained, add new service, and in this case I will add a Gmail, and then I'll connect my account, and I'll use this account, iska ID, and I'll have to add a password. And as soon as I log in with this, you can see that it's already using, I already used this cyberbuddy02 account for the other account, so इसलिए उसमें already वो permission हो रखी है check. But you have to check that, make sure of that. Is send email on your behalf. इस वाले checkbox को tick कर दीजिएगा. And then I can just create a service and send a test email to verify configuration. तो मेरे को एक email आ जाएगी email.js की तरफ से, and I can simply view that in my mailbox. So this was the account. Here we go. So you can see that this email was received to me by my own email address. ये कहाँ से आई है? cyberbuddy02 से, और कहाँ पे पहुंची है? cyberbuddy02 पे. So this is how you are sending a mail to yourself. You need to make sure कि आपको ये चीजें पता है, because email is something जो corporates में बहुत ज़्यादा अभी भी use हो रही है. So you should have basic knowledge about that. Next thing. As I have added service, so the next task is to create a template, right? अब template create करने से पहले you need to make sure कि आप एक form create कर लें, एक HTML basic form. So वो करने के लिए just open up your VS Code or Sublime Text Editor. Like yesterday, Sublime Text Editor was something we used. इसमें I used to like code HTML JS inside this folder, and इसमें अभी मैं कोई और folder को ढूंढने के बजाय एक new file create कर लूँगा, and I would say demo email.js.html, or you can also use .html like I discussed yesterday. Once you create this file, now there's this shortcut of using exclamation, और इससे मेरे को एक boilerplate code आ जाएगा as soon as I click on this option. अब document की जगह पे I can add any title like using email.js in GDSE session. Now I need to create a form. So I'll just type form tag, or I'll press enter. In this, just remove this action, and in that, in place of that, just go inside this form, and inside the inner HTML part of this form, add input tags. So मेरा पहला input type text होगा, जिसमें usually हम अपना एक user name या फिर name provide करते हैं first time जब हम एक form fill करते हैं. तो मैं यहाँ पे भी यही कर लूँगा, एक placeholder डाल देते हैं, your username, इसकी ID एक set करते हैं, USR. So ID is an attribute which uniquely defines a tag. So ID के basis पे मेरे को पता लगेगा कि ये input tag, मैं इस input tag की बात कर रहा हूँ, because I can have several input tags in my form, right? So I need a specific name कि user वाला वो input tag है जिसमें मेरा username होगा, and then this one कि इसकी ID दे देता हूँ mail, and I also have input type mail, तो आप वो भी use कर सकते हैं. उसके कुछ specific benefits हैं जो आपको मिलेंगे. Okay, and इसमें हम एक placeholder डाल देते हैं, your email address or ID. I'll say email ID. Okay, and what we can do is we can also add some message. So message के लिए I would take a text area. Okay, inside this text area, I don't want this name, I want ID. So ID के लिए I would say my message, MSG, right? And columns can be 30 and row can be something. And then I'll add a placeholder, your message here, right? And then I'll just right click and open in default browser. So अभी open in default browser वाली option मेरे को इसीलिए आ रही है because I have installed this extension, open
in browser. So ये वाली एक्सटेंशन मेरे पास है जिसके कारण मेरे को ये राइट क्लिक करने पे ओपन इन डिफॉल्ट ब्राउजर की ऑप्शन आ रही है. In case you don't have this one, just install it. It's quick and easy to install, right? You can see this is the extension. ये icon याद करिए. Okay, so now let's view this. So right click, open in default browser, and you see this is how our form looks like. तो ये इतना appealing नहीं लग रहा, तो इसको थोड़ा सा अच्छा बनाते हैं. And to do that, what we can do is we can add some styling to it or CSS to it. For that, I'm targeting form. Form को target करके I would say display should be grid. And as soon as I do that, you'll see our form looks like this, something like this. तो ये बहुत ही wide हो गया है. इसकी width थोड़ी सी कम करते हैं. इसकी wideness थोड़ी कम करते हैं. I would keep it like 80% or maybe 50%. It's something that would work for me. So 50% works for me. अब मुझे चाहिए कि इन तीनों इनपुट फील्ड्स में थोड़ा थोड़ा गैप आ जाए. एंड बिकॉज आई एम यूजिंग डिस्प्ले ग्रिड एंड येस्टरडे आई एक्सप्लेन्ड कि मेरे पास एक प्रॉपर्टी होती है गैप जो पॉसिबल है. वी कैन यूज दिस गैप प्रॉपर्टी इफ आई हैव ऑलरेडी एडेड दिस डिस्प्ले ग्रिड प्रॉपर्टी इन द सेम टैग व्हाइल टारगेटिंग द सेम टैग. सो गैप में लेट्स पुट 20 पिक्सल एज अ गैप एंड थोड़ी सी अब सेपरेशन आपको विजिबल होगी. इसको सेंटर में ले आते हैं. ओके, एंड सेंटर में लाने के लिए आई हैव टू टारगेट द बॉडी बिकॉज फॉर्म इज कमिंग इनसाइड बॉडी. तो फॉर्म जो है वो है चाइल्ड ऑफ द बॉडी. ओके, सो बॉडी को टारगेट कर लेते हैं. लेट्स से डिस्प्ले ग्रिड एंड ओके, एंड डिस्प्ले ग्रिड के बाद आई कैन से जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम्स सेंटर. Even you can use this property named place items जो दोनों properties को you can say eliminate कर देगी. सिर्फ एक property दो properties का काम कर जाएगी. But in this case I don't want it, so मैं इसको add नहीं कर रहा. Next thing, with 50% के कारण वो बहुत ही कम हो गया हुआ है, छोटा हो गया. So I would say 100%, and it has now become wider. Okay, and I would add height to this body. So height should be 100 ph. And you see, we see a little scroll bar, जबकि हमारे पास कंटेंट हमारे पेज में है भी नहीं इतना कि उसको स्क्रॉलेबिलिटी की जरूरत है. सो ये स्क्रॉल बार आ रहा है बिकॉज बॉडी के पास एक डिफॉल्ट मार्जिन होती है जिसको मैं 0 कर दूंगा. सो अब बॉडी की वो डिफॉल्ट मार्जिन 0 हो गई है एंड वी डोंट सी दैट स्क्रॉल बार अगेन, राइट. एंड अब मैं इसकी विड्थ 100% की जगह पे थोड़ी सी पिक्सल्स में देना पसंद करूंगा. लाइक आई वुड से 700 पिक्सल्स. एंड यू सी आवर फॉर्म हैज बिकम वाइडर अगेन, जो मेरे को कंफर्टेबल है. So I can add my username in this, I can add my email ID in this, and I can type any message in this. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हम भूल गए, वो है एक बटन. बिकॉज बिना बटन के क्लिक करे हम कैसे बताएंगे कि हमें फॉर्म सबमिट करना है या नहीं. सो आई वुड ऐड इनपुट टाइप सबमिट. ओके, इनपुट टाइप सबमिट एंड दिस वुड प्रोवाइड अस विद अ बटन. एंड इसमें मैं वैल्यू दे दूंगा सबमिट. वैल्यू इज द वर्ड विच यू वांट टू गेट डिस्प्लेड इनसाइड द बटन. अगर मैं यहाँ पे रख देता send details, and you would see it's changed to send details, and this one seems fine to me, so मैं send details रख दूंगा. and अब इसको थोड़ी और स्टाइलिंग देते हैं. काफी प्लेन लग रहा है बिकॉज ऑफ द बेसिक कलर स्कीम. तो इसके कलर्स थोड़े से कलर्स ऐड करते हैं, थोड़ी सी इसकी स्पेसिंग इंप्रूव करते हैं. अब स्पेसिंग इंप्रूव करने के लिए आई वुड से फॉर्म, एंड इनसाइड फॉर्म आई वुड टारगेट एवरीथिंग. so this is you can see universal selector. एंड यूनिवर्सल सिलेक्टर क्या करता है कि फॉर्म के अंदर मैंने लिखा है फॉर्म एंड इनसाइड दैट फॉर्म आई एम सिलेक्टिंग एवरीथिंग. ओके, सो दिस इज द रूल, दिस इज हाउ यू रीड द रूल इनसाइड CSS. एंड देन व्हाट आई कैन डू इज आई कैन ऐड सम पैडिंग. उससे क्या होगा, यू विल जस्ट सी राइट नाउ. सो थोड़ी थोड़ी सेपरेशन आ गई है. यू कैन सी नाउ इट्स मच मोर रीडेबल. पहले थोड़े थोड़े चिपके हुए थे कंटेंट विद द बॉर्डर्स. नाउ आई कैन ऐड माय नेम, my email, I can type the message, right? And inside this message you can see the font is quite changed. तो इसमें कुछ और font है, ऊपर कुछ और font है. तो let's add some font as well. So मैं क्या कहूँगा, body के अंदर font family. body में font family क्यों लगा रहा हूँ, मैंने input में क्यों नहीं लगाई, form में क्यों नहीं लगाई? Because body is the parent of form, input, text area. Okay, so अगर मैं parent पे जो property लगाता हूँ तो automatically जो children होते हैं उस parent के वो उस property को inherit करते हैं. इनहेरिटेंस एक कॉन्सेप्ट है कि जो अंदर है वो बाहर वाले को इनहेरिट करेंगे, बाहर की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करेंगे. चिल्ड्रन जो है वो अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी इनहेरिट करेंगे. दिस इज द कॉन्सेप्ट. सो फॉन्ट फैमिली में डालते हैं सैंस सेरिफ.
and I believe this font is fine by me. जबकि I see that it didn't make any difference, तो मैं अब इसको debug नहीं करने लगा. I would just continue with my stuff. Okay. थोड़ी सी font family बढ़ा लेते हैं और I'll just zoom it in. Okay, तो इससे काम बन गया मेरा. Okay, I'll just add a message over here, my email, my username, and my basic form is completed now. Okay, it's already 37. मेरे पास already बस 10 मिनट बचे हैं इसको complete करने के लिए. So let's quickly hurry up. Now, email.js हमने already create कर ली थी. This is where we have created. And because अब हमारे पास पता है हमें कि ये सारी input field आने वाली है. Just give me a sec. Okay. Okay, let's also add this, right? Ki after adding a service, create an HTML form, right? And fifth step is create an email template on email.js, right? Okay, so अब हम email.js पे चलते हैं. Let's create a new template, new message from, and इसकी जगह पे मैं from name की जगह पे name कर दूंगा. Okay, यहाँ पे भी from name की जगह पे I would use a variable, and variable use करने के लिए you can see the syntax, हमें ये दो brackets लगानी पड़ती हैं ऐसे, and यहाँ पे भी मैं name डाल दूंगा. Okay, in fact not just name, मैंने वहाँ पे user use किया था, right? In the ID I added user, so इसको USR कर देते हैं. Okay, इस सब को delete करते हैं, and I would simply say details. So details में what I want is the first detail should be name, and name के लिए मैंने क्या ID रखी थी वहाँ पे? If you remember, it was user. Right? The second thing was mail. Mail के लिए मैंने ID भी mail ही रखी थी, so I would just add that mail over here. And the third thing was, I believe it was message, right? And inside message, I added ID MSG. So message would be MSG. Okay, and we are done with the template. What we have done is, inside my subject, I have used this user as a variable, which would tell me that new message from this new user. Okay, and then we would get all the details that that user would have filled in the form, and I'll be receiving the mail from his own name. ये मैं दिखाऊंगा कि कहाँ पे visible होगा. Then this email will be sent to this email account. Just give me a sec. Yeah, sorry about that. Okay, so we have finally created our template. We can also rename this template, like यहाँ पे आपको दिख रहा है my default template. I can go to settings. I can rename this to my let us say GDSE form template, so that I can remember in future कि ये मैंने GDSE वालों के लिए बनाया था. Okay, and we are done. हमने content define कर दिया. We have also renamed the form. Okay, we needed to make sure कि यहाँ पे वही ID वाले variables हमने use किए. Okay, variable का syntax था double brackets like this, and we can also style this. You can see that यहाँ पे styling के भी कुछ options हैं हमारे पास. We can do that, right? थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो गया. Let's keep it retained. Okay, we can bold it. Control plus B is the shortcut key for bold. We can bold these details as well. तो थोड़ा अच्छा visible होगा हमारे email address पे, right? We can also color these. We can add this in a table. You can see I can create a table over here. So there's a lot of options you can play around. Okay, और client को भी अच्छा लगेगा जब आपके उसको जब आप उसको इस तरीके से email send करेंगे. Now I'll just simply click on save. यहाँ पे glitch आता है that as soon as I click on save, it asks me, do you have unsaved changes? Do you want to continue? You have to say cancel. Cancel करना है. You need to make sure. And I'll also add it in template. On clicking on save, you have to cancel the dialog box. Okay, तो बाद में save करेंगे. Okay, done. Now I have also saved this, and as soon as I refresh this now, you have to refresh this. You'll be able to test it. I don't know why. Okay, wait. Sorry. So go back to the template and you'll be able to test it. Okay. So test के टाइम पे अब मैं जानबूझ के टेस्ट कर रहा हूँ because यहाँ पे मेरे को एक कोड मिलता है जो मेरे को required है. Okay. So this is the code. I'll copy it and अभी हम टेस्ट कर सकते हैं कि हमारा ये चल रहा है. Like user में I'll enter my name Manas Gupta. Then I would enter my mail. Mail can be anything.
Then message can be hi and reply to. So reply to होता है कि जब आपकी मेल सेंड होती है, then this is the stuff कि जहाँ पे आप रिप्लाई करते हैं, तो इस बंदे को रिप्लाई जाएगा जो भी मैं इसमें मेल डालूंगा. लाइक इफ आई एंटर माय ईमेल आईडी, तो अगर अब मैं इस मेल पे रिप्लाई करूंगा, सो द रिप्लाई वुड गो टू दिस ईमेल आईडी. ओके, नथिंग हार्ड. इसको इनफैक्ट मैं रिड्यूस कर देता हूँ. उसके लिए आई सिंपली हैव टू, आई गेस, रिमूव दैट रिप्लाई टू थिंग. ओके, सो चलिए now mail@mail.com. Message can be hello aliens. That's aliens. Okay, spelling wrong while aliens. And it can be anything. @mail.com. Let's send test email. And as soon as I click on that, it says 200. Okay. मतलब हमारा जो मेल था वो सक्सेसफुली सेंड हो गई है. And let's check that, right? So I'll check this mail and let's go to send and you say this. Check this out. So वही font size, वही boldness and यही डिटेल्स मैंने अभी सेंड की थी. So it's totally working fine. बस अभी हमें क्या करना है कि जो डिटेल्स हमने यहाँ पे सेंड की है, हमें यही डिटेल्स जो है इस फॉर्म के थ्रू सेंड करवानी है, राइट? सो इस फॉर्म के साथ कनेक्शन कैसे बिल्ड करें हमारे ईमेल जेएस के साथ, आई विल शो यू दैट. आई विल कैंसिल दिस अप. नाउ यू विल सी अ डॉक्स ऑप्शन ओवर हियर. जस्ट क्लिक ऑन दैट. डॉक्स ओपन कर लो. यहाँ पे इफ यू स्क्रॉल डाउन ऑन द साइड बार यू विल सी एन एसडीके. सो जस्ट क्लिक ऑन इंस्टॉलेशन and then you see two options. One, you can install it via npm, and the second option is to just copy this script tag. I'll just copy it up और अपने कोड में जाके फॉर्म के नीचे पेस्ट कर दीजिए. एंड देन राइट क्लिक एंड फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेना, उससे आपका डॉक्यूमेंट क्लीन हो जाएगा. बिकॉज अर्लियर इट लुक समथिंग लाइक दिस. as soon as I right click and format document, it looks like this. Okay, in this what you have done is you have added an SDK. So this script tag is an SDK. इसके अंदर कोड लिखा हुआ है email.js का, जो हमें लिखने की जरूरत नहीं है, उन्होंने पहले से लिख के दिया हुआ है. You just need to replace this your public key with your public key. Okay, so वो public key कहाँ पे मिलेगी? You have to go back to your dashboard, go to the account, and in this you simply see public key. So इसको copy कर लीजिए और यहाँ पे पेस्ट करना है, right? And yeah, your SDK is finally installed. अब आप इसमें कोड कर सकते हैं. So just go to like other line beneath that and just type a script tag. Script के अंदर if you remember हम जब email send कर रहे थे टेस्ट करते समय, you would see this code right over here, the JavaScript code. इसको कॉपी कर लेते हैं, हम पेस्ट करते हैं. oops. And इसको इनफैक्ट हम एक फंक्शन के अंदर पेस्ट करते हैं. What I'll do is I'll add a function over here. फंक्शन का नेम लिखते हैं send mail. Parameters में I wouldn't add anything, and I'll paste this right over here. Okay. Now if you remember, this is the service ID, right? So इस ID से उसको पता लगता है that which service ID are you talking about? Which service are you talking about? If you remember, we had services, two services over here, right? So this is the service I'm using currently because this is the service ID, and in the code as well you can see this is the service ID. This is the template ID जिससे इसको पता लगता है that which template are we using, because we can add many templates in our email.js. And now we have to add a third parameter. It should be data. Okay, so this data, अब ये data एक variable है और ये data आएगा कहाँ से? So we'll have to create this data. So to do that, I'll first fetch some values from these input tags. तो मेरे पास तीन input tags है. The first one enters a username, the second one gets a mail, and the third one gets the message. So इन तीनों को get करने के लिए, now I won't explain this code, but इसको याद रखिएगा that you have to create a variable. Let user is equal to document dot get element by ID. Inside that, inside inverted commas, just enter USR. That was the ID of this input tag, right? And then you can say dot value, and you're done. Then we have to do the same thing for mail and the text area. So let mail is equal to document dot get element by ID, and here we go. Let message is equal to document dot get
element by id message.value, and we have successfully fetched the values from the input tag. So ये कोड ज्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं है, एंड दिस इज समथिंग यू विल बी यूजिंग ऑन डेली बेसिस इफ यू विल बी डूइंग जावास्क्रिप्ट. सो अगर अभी समझ में नहीं आ रहा, just remember, we have created a variable, and then we are trying to access the HTML document because this is JavaScript. Okay, this is where we are writing JavaScript. So we are trying to access the document. Inside the document, we are trying to access an element via its ID, and the ID of the element as we kept it was user, and we are specifically asking for the value inside this tag. तो जो हम वैल्यू एंटर करेंगे इसके अंदर, हम वो चाहते हैं हमारे इस वेरिएबल में स्टोर हो जाए. एंड अब इन तीनों वेरिएबल्स में जो वैल्यू होगी, वी वांट दोज थ्री वैल्यूज टू बी इनसाइड आवर डेटा वेरिएबल. सो लेट क्रिएट दिस डेटा. सो लेट डेटा इज इक्वल टू, I'll add an object in this. So what happens is, जो ये data है, this needs to be an object. So JavaScript में एक data structure होता है, that is object, या फिर JSON object भी बोलते हैं. So inside that you have to add key value pairs. Like I'll say user is equal to user, comma mail. Mail is the key, and the value is inside this variable mail. तो मैं यहाँ पे भी mail लिख दूंगा. And then message and message. So key का name भी message है, and in fact what I'll do is, if you remember, इस template के अंदर it's not message, it's MSG, and यहाँ पे भी MSG है. So auto suggestion ने गलत कर दिया था, so I'll just improve this. It should be MSG. Over here as well, it should be MSG. So my bad. Now it will work fine. Okay, so हमारा code completed है and it should work fine. बस आपको क्या करना है, यहाँ पे इनपुट जो सबमिट है, हमें यहाँ पे एक इवेंट डिफाइन करना पड़ेगा. जावास्क्रिप्ट इज अ लैंग्वेज दैट ऑपरेट्स ऑन इवेंट्स. ओके, एंड यू कैन गेट टू लर्न ऑल ऑफ दिस ऑन W3 Schools. ओके, W3 Schools खोलिए, उसमें जावास्क्रिप्ट पढ़िए, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट, एंड बहुत इजी लैंग्वेज है, बिलीव मी. यू विल बी एबल टू क्रिएट wondrous like websites, web applications, a lot of stuff. Okay, so इसके ऑन क्लिक पे आई एम डिफाइनिंग कि ये सेंड मेल बटन एग्जीक्यूट होना चाहिए. For those who don't know what are functions, function is a piece of code that is executed when it is called. So अब मैं उस function को call करने वाला हूँ so that वो execute हो सके. But मैं इसको call कब करूँगा? जब मेरा click होगा ये input button. Okay, so that's how it works. So now if I have to show you my code, this is the form. These are the input tags. This is a button. On click of this button, we'll execute send mail. And send mail is a function which first fetches all the values from those input tags and then creates an object of those values. And then we are using email.js as the service to send all those values over our mail. So that's how the flow of this code works. Okay, we have also defined some styling, and I guess this is a pretty form now that we have created. I'll just press F5 and let's test this. So I'll add a username, like I'll say somebody, and then I would add my email ID, like it can be anything, and then messages hello world. Let's see. So send details के execution पे मुझे कोई you can say alert नहीं आएगा that we have successfully submitted it. तो मुझे console खोलना पड़ेगा so that I can see कि ये successfully submit हुआ या नहीं. I'll click on this button, and yeah, you saw something, right? कि ये automatically page refresh हो गया. In case you weren't able to see that, और मेरे से भी एक चीज मिस हो गई. So what happens is, फॉर्म का एक डिफॉल्ट बिहेवियर होता है, जिसके कारण क्या होता है, जब आप एक सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं, द पेज ऑटोमेटिकली रिफ्रेशेस. सो उस पेज को रिफ्रेश से रोकने के लिए व्हाट आई हैव टू डू इज, ऑन सबमिट ऑफ दिस फॉर्म आई हैव टू रिटर्न फॉल्स. सो दिस इज अ बेसिक स्टफ, एंड इसको फिर से ट्राई करते हैं. Let's send details, and I didn't see any error. I didn't see the form refresh, so I believe हमें details आ चुकी होंगी. So I'll just refresh this, and yeah, I've got the details. So it was successful. So ये code totally working है, and in case you guys want to try it, so you can just create your own code. You can take a screenshot of this. In fact, I'll be sharing this code to you guys. So the service for sharing this code I'll be using is Ghostbin.
आई नो मैं ज्यादा थोड़ा तेज पढ़ाता हूँ एंड थोड़ा आपके लिए बाउंसर जा रहा होगा, बट बिकॉज दिस वाज अ 2 days सेशन और 2 दिन में आपको ना HTML CSS ना जावास्क्रिप्ट समझ में आएगी, यू कैन जस्ट सी कि इस तरीके से काम होता है rather देन इसको समझने की कोशिश करें. ओके, समझना है तो ओपन WC स्कूल्स, ओपन यूट्यूब और जस्ट ट्राई टू सीक हेल्प फ्रॉम एनी अदर पेयर यू सी इज वर्किंग इन वेब डेवलपमेंट. ठीक है, समझने के लिए वही काम आएगा. बट अगर आपको देखना है कि काम कैसे होता है वेब डेवलपमेंट में, sessions are the way to go. I'll keep it the name as okay. What should we keep? Email JS, HTML. I'll paste it. We get a unique URL in which the code will be shared to you guys. So इसको मैं notepad पे डाल देता हूँ. Let's complete the step and we'll see. थोड़ा सा रिवाइज करते हैं. So पहले हमने email JS पे गए थे, in which we signed up and then logged in. फिर हमने एक सर्विस ऐड की थी and make sure to do this क्योंकि फिर नहीं तो एरर आएगा. फिर we created an HTML form, we created an email template and then on clicking on save you'll see a dialog box जिसको आपको cancel करना है. Remember that. Okay. Then go to docs. If you remember, went to the docs. यहाँ पे वो docs, right? So go to docs, go to SDK, go to docs, SDK, installation, right? And SDK will be present. Scroll down on sidebar, and then installation, and then copy the browser script. Browser script. Then what you need to do is replace your public key, add your public key that you will find on account tab in dashboard. Okay, and once you do that, you have to write the script to send mail, which you can see from this code. Okay, ये जो मैं शेयर करूंगा आपको, जो इसमें यहाँ पे इसको लिंक में मिल जाएगा आपको. Write code to send mail via JavaScript, and that's it. छोटी सी चीज करने के लिए यू हैव टू लर्न अ लॉट ऑफ स्टफ. सो ये फील्ड जितनी इजी है उतनी है भी नहीं. मतलब जितनी दिखती है ना इजी, उतनी फील्ड ये इजी है भी नहीं. और you just have to practice to reach at such kind of level. Okay, sending an email is a pretty basic job, but अगर नहीं पता तो नहीं पता. It's like कि अगर नहीं देखा अभी तक चलते हुए, then you wouldn't be able to think on your own कि ये होगा कैसे, right? Should I? Yes, yes. Okay, guys. For those who are still in the meeting, see, today's session was meant to be about Angular. Okay, for those who don't know, Angular is a technology which would come after you learn JavaScript. Then you will be going to the frameworks. Like Angular is a framework, Vue is a framework. आप लोगों ने React के बारे में सुना होगा. It's not a framework, it's a library. But React भी इनके साथ you can say compete करती है. Okay, and Angular is one of the technology developed by Google, and you can create web applications via this. अब एक वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन में क्या फर्क रहता है? दैट अगर आपकी वेबसाइट सिर्फ आपको चीजें दिखा रही है, देन आपकी एक वेब एप्लीकेशन चीजें कर भी रही है. लाइक लेट्स से आई क्लिक ऑन दिस बटन, राइट? सो इसका एक सिंपल काम होगा टू गेट मी ऑन दिस पेज. ओके, दैट्स वेरी प्रीटी बेसिक अबाउट ये एक वेबसाइट कर सकती है. बट अगर मैं चाहता हूँ कि इस बटन के क्लिक करने पे एक एपीआई कॉल जानी चाहिए जिससे मेरे डेटाबेस में डेटा स्टोर होकर वापस मेरी वेबसाइट पे प्रेजेंट होना चाहिए. सो दिस इज प्रीटी रफ जॉब, राइट? कि इतना सब कुछ हो गया एक बटन क्लिक पे. So that's where web applications come in use. Okay. So today I want to discuss about this Angular technology, wherein if you want to get started on Angular, you can just again go to docs, angular.io पे जाइए. Just click on the docs on the navbar and you can click on get started, wherein you will find this try it tab. अब आपको अगर इसको try करना है, then I would suggest go to this try it, click on get started. Over here you're going to find this thing, the stack blitz. Okay,
So I believe you can click on this one. As soon as you click on this link over here, create the sample project, यहाँ पे जाके ready-made sample project in Slack Blitz, you'll see this is something looking like a VS Code, right? So ये VS Code जैसा interface है wherein you see an explorer, you see the code editor. अब यहाँ पे एक terminal जैसी एक न्यू चीज हो गई आप लोगों के लिए आज के सेशन में. So terminal is something which execute commands for you on your system. So बहुत एडवांस हो जाएगा अगर मैं सबको इन डिटेल बताना शुरू हो गया. सो एंगुलर के बारे में थोड़ा बहुत मैं शेयर कर सकता हूँ. एंगुलर इज अ फ्रेमवर्क which uses JavaScript and TypeScript as its foundational languages. मतलब इसमें जो भी काम हो रहा है वो या तो JavaScript से हो रहा है या TypeScript से. TypeScript क्या होता है? TypeScript is like superset of JavaScript, जहाँ पे आपको JavaScript की और फंक्शनैलिटी देखने को मिलती है. Like in JavaScript you cannot set data types. अगर आप लोग Python से आए हैं तो आपको पता होगा data types क्या होती है. That we have something known as data types for variables. And TypeScript में आप variables में you can say data types भी define कर सकते हैं. That's why it's TypeScript, right? TypeScript. अब दिस इज अ बेसिक एप्लीकेशन जो हम एंगुलर में जिसके ऊपर हम ट्राई कर सकते हैं कि चेक करने के लिए कि एंगुलर कैसे वर्क करती है. सो ओवर हियर यू कैन सी ऑल द स्टेप्स. फर्स्ट थिंग इज लॉग इन इनटू स्लैक ब्लिट्स, बट आपको लॉग इन करने की जरूरत नहीं है. यू कैन एंड ऑल्सो आपको फॉक करने की जरूरत नहीं है. You can simply start up with this section over here. In Slack Blitz, the preview pane on the right shows the starting state of the example application. So, right side पे ये preview pane है, जहाँ पे आपको दिखेगा कि हमारी एप्लीकेशन भी ऐसी दिख रही है, जहाँ पे My Store लिखा हुआ है, चेकआउट बटन है, and we'll see a product's title over here. Okay. Then the next thing is the project section on the left shows the source files. तो यहाँ पे आपको सारे सोर्स कोड मिलेगा. जैसे अभी हमने HTML फाइल क्रिएट की थी, राइट? सो एक एप्लीकेशन में सिर्फ एक HTML फाइल नहीं होती, बहुत सारी फाइल्स होती है, बहुत सारे फोल्डर्स होते हैं. सो दीज आर द फाइल्स एंड फोल्डर्स फॉर दिस प्रोजेक्ट. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट अ बिट ऑफ कोडिंग. ओके, देखते हैं एंगुलर में ऐसा क्या नया है जो हमारे पास HTML CSS JS में नहीं है. सो आई जस्ट यू कैन सी ओवर हियर इट्स प्रोडक्ट्स, एंड यहाँ पे जो एक्टिविटी है, it would allow us to add products like phone Excel, phone mini, phone standard. अब ये चीजें ऐड करने के लिए यहाँ पे they've already created a file products, जहाँ पे उन्होंने कुछ प्रोडक्ट्स डाल रखे हैं, जैसे नेम ऑफ द प्रोडक्ट इज फोन एक्सेल, फोन मिनी एंड फोन स्टैंडर्ड. सो हमें चाहिए ये इंफॉर्मेशन से हमारे कुछ कंपोनेंट्स जो हैं हमारी एप्लीकेशन में जनरेट हो जाए, मतलब प्रोडक्ट्स के नीचे दिखने शुरू हो जाए. ओके, सो हाउ टू डू दैट? इन्होंने ऑलरेडी यहाँ पे कोड भी दे रखा है. सो इफ आई कॉपी दिस कोड and I have to go to this file that is inside source app product list. I'll see product list dot component dot html. So I'll go to product list dot component dot html, and इस h2 के नीचे, if you see the code carefully, इस h2 के नीचे, या फिर you can just copy this whole thing and पूरे को पेस्ट कर सकते हो, and then you'll see the thing that was displayed over here. Okay, so इस तरीके से आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा. अब इन्होंने आगे एक और एक्टिविटी शो की है जिसमें ये क्या कर रहे हैं कि इन प्रोडक्ट लिस्ट को क्लिकेबल बना रहे हैं, कि जैसे अब मैं फोन एक्सेल पे क्लिक करूंगा, देन आई विल बी एबल टू सी द डिटेल्स ऑफ दिस फोन एक्सेल. ओके, एंड टू डू दैट सिंपली कॉपी दिस कोड. अब इसमें कॉपी पेस्ट वाला काम पूरा नहीं करना. ओके, मतलब सिर्फ कॉपी पेस्ट नहीं करना है इसमें, यू ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड दिस कोड. अभी फिलहाल मैं इसको कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ. ओके, एंड नाउ इट्स क्लिकेबल. यू कैन सी आई गेट दिस हैंड कर्सर थिंग, एंड इस पे होवर करने पे आई गेट द टाइटल दैट इज फोन एक्सेल डिटेल्स. ओके, तो चलो इसको थोड़ा समझा के भी दिखाता हूं आपको. ओवर हियर आई एम यूजिंग अ div tag. इस div tag में आई एम यूजिंग एन एट्रीब्यूट ng_for. सो ये फॉर जो है ये फॉर लूप की तरह वर्क करता है, जिसमें हमने अगर आपने पाइथन की है तो पाइथन में भी ऐसी लूप होती है कि लेट प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट्स. अब ये प्रोडक्ट्स क्या चीज है? दिस इज एन ऑब्जेक्ट इनसाइड प्रोडक्ट्स डॉट टाइपस्क्रिप्ट. यू कैन सी दिस वन. ओके, एंड इस प्रोडक्ट्स में है डिटेल्स लाइक प्रोडक्ट्स डॉट नेम, ओके, प्रोडक्ट्स डॉट आईडी, प्रोडक्ट्स डॉट प्राइस. सो अभी हमें मतलब था प्रोडक्ट्स नॉट नेम से, हमने वो उठा लिया, प्लस उसके हमने कॉन्कैटिनेट कर दिया डिटेल्स के साथ. सो मेरे को लगता है ये काफी एडवांस है आप लोगों के लिए. यहाँ पे कोई भी नहीं है जो इस लेवल तक अभी तक मतलब अचीव करा होगा किसी ने, ठीक है, कि एंगुलर तक पहुंच गया एंड एप्लीकेशन बनानी शुरू कर दी. बट इन एनी केस if anyone who has tried to create an application, web application, तो वो मेरे को बता सकता है. I actually require some people with me. Okay,
सो दिस इज बेसिक स्टफ अबाउट एंगुलर. ओके, कि एंगुलर में हम ऐसे काम करते हैं कि हेडिंग टैग डाला, उसके अंदर हमने एंकर टैग यूज किया. एंकर टैग इज फॉर क्रिएटिंग द हाइपरलिंक्स, एंड ऐसे टाइटल एट्रीब्यूट यूज करके हमने बस प्रोडक्ट डॉट नेम से एक्सेस करने की कोशिश किया है इस वेरिएबल से इस फाइल के अंदर. ओके, सो इसको मैं यही तक रखूंगा. And that's about Angular in case anyone didn't ever see Angular yet. So ऐसी कुछ दिखती है. Okay.